Assalamu alaikum, good morning, subha bakhair. Good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. क्या हाल है आप लोगों का? Excited इसलिए हैं because obviously आपको पता है ज़रा यूनिवर्सिटी का ज़माना याद आ गया। ये दो यूनिवर्सिटियों के रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना ब्रोशर या पर्सपेक्टिव्स हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, व्हेन यू आर आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी ना तो बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी फुर हो जाती हैं आपके दिमाग में, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको याद रहता है बिकॉज यूनिवर्सिटी इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट स्टडीज़ एंड एजुकेशन। इट्स पूरा एक होलिस्टिक, आपकी पर्सनैलिटी एक डेवलप करती है। तो इसलिए कोशिश हमेशा यही होती है कि आप बेहतरीन जो आपके पास ऑप्शन हो आप वहाँ जाएँ। तो ऑप्शंस की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जी एक ज़बरदस्त किस्म का जिसको एक कॉलेज फेयर कह सकते हैं हो रहा है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। आज कराची में शाम को मुख्तलिफ इनफैक्ट 19 बैरून मुल्क अमरीकी यूनिवर्सिटियों के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। अगर आप सीरियस हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्टर करें eduusa.pk पे। दोबारा से मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, eduusa.pk पे आप रजिस्टर करें जाके। पूरा एजुकेशन है, edu है educationusa.pk पे आप रजिस्टर करें जाके। आपको खुद ही वहाँ से वेन्यू का मालूम हो जाएगा और आप इन 19 यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ दोस 19 वी हैव 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 2 reputed यूनिवर्सिटीज़ ऑफ USA। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर से आई हैं मेडिसन फेरेरी, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग इट। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट से वी हैव केनेथ डिसाई। How are you doing, guys? Wonderful. Very good. How are you? Thank you so much for being here. And we are very curious. This is not your first time here in Pakistan. Pakistan keeps bringing you, calling you back here. Rather, who keeps bringing you here? Exactly. That should be the first question. But Medicine, I'll start with you. We'll get right down to it. Why should Pakistani students opt for University of New Hampshire? Let's suppose. So, University of New Hampshire, along with other universities in the U.S., have a lot of benefits and flexibility for undergraduate students to not be completely sure about, what they want to do with their career maybe 10 years down the line, right. But they can come to the United States and study in a degree and have options to take a few courses and then declare their major, which is something that's, I think, unique to the US, where students can come, they can change their major once they arrive. Right. That being said, the level But isn't that the same for any university? Because, you're so young when you go and there has to be an option for you to maybe find your calling, what you want to do later on. So you can change at any time your majors? Typically, once you are in university for a year or two, that's when you will need to declare your major. Some students will know right away, and then they'll start, and then they'll complete their degree within about 4 years. But sometimes students may decide, if they go into engineering and say, you know what, linguistics is actually something I'm more interested in, then they have that flexibility to change their major. All right, Kenneth, there are a few names that we are all aware of that people like to opt for, but University of Bridgeport, you already have a handful of Pakistani students studying there, and this is the 3rd time here to impart knowledge and recruit students and create awareness about this university. What programs do you offer, and are there scholarships available for deserving students here in Pakistan? Yeah, Abdullah, we have 10 students from Pakistan that are currently studying on campus, and with COVID, we had an opportunity to have a little bit of a break, and more of our activity was focused on virtual recruiting. This is our opportunity to come back to the Pakistan and meet the students face to face. Many of the students that we had the opportunity to meet with talked and expressed concern about the cost of higher education, which I don't think is any different than many of our families face in the United States. I work for a University of Bridgeport, that makes a commitment to making education affordable for our students, not only for our undergraduate students, but also for our graduate students as well. And it's really a seamless process where students are applying for admissions, and simultaneously they're being considered based upon their academic record what that scholarship will be. For our undergraduate students, students can receive up to $20,000
annually for their scholarship. Wonderful. For our students on the graduate level, those students can receive up to $4,000 annually. Not bad. I'm sure students who are and then they can work along as well. And okay, but I'm curious. Afford their own education and what expenses. are you looking for in a student? So, who would be an ideal, candidate? Okay, I'll start with you, Edson. Who's an ideal candidate? These are the kind of, young people that we would like in our university. Yeah, so we're looking for students to have academic success, so that they've done well in their previous studies, as well as have good communication skills. That's important. Yeah, and have demonstrated that they've overcome challenges. Traveling from Pakistan to the US will be a challenge in adapting to the new environment for a lot of students, especially at the undergraduate level, when they're a little bit younger per se. And so seeing within their transcripts if they've done well over time, as well as in statements of purpose, talking about times where they've overcome challenges, as well as letters of recommendation from faculty or teachers in the past to kind of highlight some of those aspects. Is there a special opportunity for women and young girls who are watching us right now? Because, a lot of families do send their boys for the higher education to countries like US and UK. But there are lesser opportunities, let's be honest, for women. No, opportunities are there, but the concerns are massive. But the concerns are there. So security and other issues as well. So we are certainly a conservative society. So how do you address that? Well, what I would share, like yesterday we had the opportunity to visit 2 universities here in Karachi, and I met with many female students that had an interest in studying. And I asked them the question, I said, how do your parents feel about you exploring an opportunity to study abroad? And more often than not, more of the families want them to get that experience of higher education abroad. We do share information regarding safety of our students in the campus. I feel very fortunate to work with a university that has a strong security within the campus compound that makes the students aware that they are still in a city environment, but it is a safe environment for those students. All right, so when students are applying for the universities like University of Bridgeport, so there's usually a general form that they would have to fill to tell the university about themselves. So what is that one particular thing or a few things that would make a student stand out from the rest that you would certainly consider, all right, we should consider that this young boy or young girl? Abdullah, what I would share with you is that if a student can convey that passion for that career path that they have, I think that's important to us. Because in the United States... How would you determine that passion? Well, would you have an interview conducted, or would you just read whatever they have written in their form? This is a perfect opportunity for us as we're meeting the students one-on-one, whether it's in high school or with some of the other colleges that we'll be visiting with during our tour program. It's just trying to understand what that needs and desires are for the students, not only their education, but for their career path. I think critical for us is that there are 4,000 colleges in the U.S. Which one is right for that particular student? So we do a lot of interaction with the students, trying to understand what those needs are. And if I can find a match with the University of Bridgeport, that's great. If I can't, Madison's program might be a great alternative. Or some other program. Since both of you, have been here before, I'm just curious to know, what are the similarities between students here in Pakistan and, back in the US? Do they have anything in common? The concerns, are they the same? Because obviously these are 2 drastically different parts of the world with different opportunities. I'll just say, I think that the students, if students are, being prepared through the education system, we have extremely successful Pakistani students coming out of universities in the U.S. that are in the same classrooms as American students and doing perfectly well amongst themselves. So I think that, again, the concerns are the same, being on campuses and wanting to be challenged by their programs, being in a diverse environment, a fun environment that's promoting a learning experience is really important for both
both students as well as a safe environment too. So I think there are a lot of similarities that the students are looking for. Okay, we are going to translate a little bit of everything that you said, क्योंकि ये opportunity जो है जितनी इनसे बात कर रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की है, इसलिए भी क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं और पेरेंट्स के तो बहुत ही कंसर्न्स होते हैं, तो आप मतलब आप सवालों की बौछार कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इनके पास सारे जवाब हैं जो आपके कंसर्न्स हैं, बच्चों को बाहर भेजना, स्कॉलरशिप, सिक्योरिटी, ये जो बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं, बेस्ट तो ये है कि आप इन पर्सन आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और ये दो यहाँ मौजूद हैं, 19 यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं पाकिस्तान। education.usa.pk पे जाके आपने रजिस्टर करना है, वेन्यू वगैरह आपको रजिस्ट्रेशन के बाद वहीं से पता लग जाएगा। आज कराची में ये सेशन हो रहा है, इसके बाद लाहौर इस्लामाबाद में भी होगा। सो यू हैव बीन हियर बिफोर एज वेल एंड यू हैव इंटरैक्टेड विद द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एज वेल एंड यू हैव बीन हियर बिफोर एज वेल। सो हु इज ब्रिंगिंग यू एंड अदर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स टू दिस part of the world? We work right now with Education USA. That really kind of acts as more of a conduit between the U.S. institutions and the students that are here. And it's not only just getting that opportunity to meet with the students on the undergraduate and the graduate level, but we are also getting the opportunity to meet with many of the educators and counselors at the high schools and at the universities to help to build a rapport. Long-term relationships are important between the University of Bridgeport and our colleagues here in Pakistan. Okay, one thing that I've noticed, because going through this prospectus, there are so many disciplines that we are not even familiar with here in Pakistan. So I'm just, curious, when Pakistani students go to states, do they pick up the very, very common, well-known disciplines, some of the STEM programs, to do their graduation in, or are they adventurous enough to go with the disciplines? There are so many. I mean, I will just, for one, आपको interest होगा ये देखे कि masters program है acupuncture में। ये बड़ी एक स्पेसिफिक किस्म के मेरा ख्याल है डिसिप्लिन है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हम इनसे बात कर रहे थे नहीं जाते होंगे, लेकिन चीज़ें जो हम इधर अब्दुल्ला नहीं देखते। So what do Pakistani students prefer? Generally, we found a lot of our Pakistani students applying into some of our STEM programs and our business programs. Although at one of our university visits, I was surprised to hear a lot of interest in some of our MBA and business programs at our university. But typically engineering, computing, that's what we see. Computer sciences. Computer science, the engineering programs. Yesterday, and it might have been the two universities that we went to visit, the Institute of Business Administration and the Institute of Business Management. I had so many students that had interest in the MBA programs, but a lot of times that there's some sub-disciplines. So students had interest in human resources, they had interest in supply chain management, finance, which all fall under the MBA program at University of Bridgeport. All right. बहुत options हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और इनके अलावा भी, sorry, I have to keep, so that as many students as who are watching us, can take advantage of the fact that you guys are here, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें भी हैं कुछ। All right, so guys, if you're interested to study abroad, particularly USA, तो Education USA आपके लिए एक बेहतरीन opportunity लेकर आया है। ये sessions physically हो रहे हैं after a long break of COVID, when the world was virtual. उसमें भी हो रहे थे, लेकिन उसमें भी हो रहे थे, but it is always better to meet people in person and ask your questions, and they would address your concerns as well. So जो मशहूर अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ हर किसी को तो दाखिला नहीं मिलता, ना कोई हर कोई जा सकता है, बट अदरवाइज इसके अलावा भी क्वालिटी एजुकेशन की बेतहाशा अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, जिसमें से 19 यूनिवर्सिटियों के रिप्रेजेंटेटिव आज आए हुए हैं। कराची, उसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर जाएंगे एजुकेशन यूएसए के ताउन से, और इनसे आप मिल सकते हैं education.usa.pk पे जाकर रजिस्टर करने के लिए। बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। So is there anything that you would like to tell all those students who are watching this, potential students and their parents are watching you guys right now, what should or what can they expect when they meet you in person in today's session? Yeah, Abdullah, what I would share with the families is to come out together. It's usually it's the family dynamics of making that decision of what that right institution is. Be open, share as much about yourself and what those aspirations are, so that we have the ability
to share with you. Maybe this is a potential match for us. We're looking to again to globalize our campus. Right now we have representation from 80 countries with over 1,300 international students, and we're looking to grow. Wonderful. Medicine, what about you? Yeah, I'll say that we're looking forward to talking with new students and families if they're able to join us and treat it as almost like an advising session and really get down to, is our university the right fit? And go from there. And you can also help them determine what their real interest is. Exactly. What can be the right subject or field of study of education for them can be. Exactly. Do you also provide counseling for that? Absolutely. Wonderful. Thank you, Kenneth Medicine and Kenneth for being here with us. I hope you're having a good time here in Pakistan. Yes, we are. Definitely. Thank you. Awesome. तो फिर लिहाजा आप जा सकते हैं जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत से होते हैं और वो आप जब लिखना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्या पूछें, किससे पूछें, ये होंगे वहाँ। So, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो ऑफर कर रहे हैं उसमें से अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही है कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा हो सकता है तो these guys can always help you. ये यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं representative of the universities to help you and guide you that which program is the right fit for you and which university can be the right place for you to go and study abroad, and scholarships be available. And for all those who are concerned that they would not be able to afford it, तो उनके लिए there are many opportunities. So you can always go and discuss it. चलो अब पता चल गया कि आज आप क्या कर रहे हैं और उसके बाद of course लाहौर और इस्लामाबाद में भी कल एक स्टोरी सामने आई है और बड़ा परेशान किया है। इस स्टोरी ने सब लोगों को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में अमन और अमान, कानून की अमलदारी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल क्या है इसका अंदाज़ा कल पेश आए इस वाक़े से लगाया जा सकता है। जमशेद रोड मार्टिन क्वार्टर्स के इलाके में मारूफ प्रोड्यूसर नबील कुरैशी मौजूद थे। शूटिंग के दौरान हिरा मानी और दीगर सुपरस्टार्स गुलराना और का 40-50 अफराद के क्रू के साथ एक शूट कर रहे थे कि वहाँ एक मामूली सी बात पर महल्ले में से कोई गुंडे बुलाकर इन लोगों पे हमला आवर हो गया। मतलब कोई दर्जनों अफराद जो थे वो जत्थे की सूरत में उन्होंने हमला किया है और औरतों और बच्चों समेत सबको हरासा किया है जो कि सेट पे मौजूद थे। कोई ऐसा सीन चल रहा होगा जहाँ बच्चे भी थे तो वो भी बेचारे हरास हुए और कुछ लोगों ने खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई, लेकिन हमला करने वालों के हाथ जो लगा, मारपीट भी की, चीज़ें तोड़ी भी, महंगा साजो सामान, मोबाइल फ़ोन जो थे वो भी लूट लिए। इतना बड़ा सीन क्रिएट हुआ जो कि आई गेस मूवीज़ में भी नहीं होता, लेकिन दिस इज़ व्हाट दे हैड टू गो थ्रू। मतलब वो जो ट्रॉमा है ना, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसमें छोटे बच्चे भी आपके साथ शूट पे मौजूद हैं जिनके वालिदैन ने आपको ये जिम्मेदारी दी होती है कि आप उनकी हिफाजत करेंगे लिटरली। और बाहर से एक जत्था आया है मॉब की सूरत में जो तोड़फोड़ कर रहा है, मोबाइल छीन रहा है, जदोकोप कर रहा है, हंगामा मचा रहा है। अच्छा, नबील कुरैशी का खुद भी उन्होंने बयान किया कि एक्चुअली क्या हुआ, तो ये देखते हैं। Nothing. It was like we were shooting in PIB colony. We were shooting like normally जैसे हम करते हैं, तो बराबर में पड़ोस वाले थे, उन्होंने बोला शोर नहीं मचाओ, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी नहीं मचाएंगे। एंड देन जो ओनर जिसका घर था उससे उनकी जो है वो लड़ाई शुरू हुई है। एंड देन दिस लाइक 50 and hundreds of people like start broke like into the house. मैं और सारे बच्चे एक्टर्स एंड हिरा मानी एंड राना भाई, हम सब जो है फिर एक कमरे के अंदर छुपे रहे for an hour, and they were like outside knocking the door continuously, like they broke the door. राना भाई like सोफा लगा के दरवाजे के साथ खड़े रहे, 4 लोग दरवाजा होल्ड करके खड़े रहे। उन्होंने बाहर जो लोग था, क्रू था हमारे, उसको मारा है। like 4-5 लोग हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं। they like snatched their phones। जो घर के लोग थे, जो यानी कि जो घर वाले थे, उनको भी मारा है, उनके जो है वो जेवर छीन लिए। like 1 घंटे तक it was like honestly like I have never faced such thing in my life, like harassed। बेचारी हिरा बोल रही है वो दरवाजे के अंदर से कि भाई लेडीज अंदर बच्चे हैं, like forgive us please, sorry, मतलब आप क्यों अंदर लेडीज हैं, but they were like they don't care, they harassed everyone। Then we called police. Police took like an hour to reach. Then everyone like I used my direction. I called Fiza for help. Then Fiza reached with the police, and then we all rescued from there, because like it was hundreds of people and it's not like religious at all. It is just like पड़ोसी जिसने अपने सारे दोस्त यारों को इलाके के बुला के ये सब चीज़ करा। It is unbelievable। अच्छा, ये बड़ी अजीबोगरीब बात इसलिए भी है कि नंबर वन वी थिंक कि मतलब सेट्स पे एक तो सिक्योरिटी होगी, लेकिन ऑब्वियसली एक पूरी मॉब ही आ जाए तो 100 लोग आ जाएंगे तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो क्या सिक्योरिटी होगी। और दूसरा 1 घंटे तक पुलिस नहीं वहाँ पहुंची।
पता है एक इतना फेमस एक डायरेक्टर है, हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ एक रौला पड़ी गया तो पुलिस 1 घंटे तक क्या कर रही थी, ये मुझे बात बड़ी अजीब लगी। उसके बाद व्हाट डिड दीज पीपल वांट, ये इतना न्यूसेंस क्यों क्रिएट हो रहा है। और ये दीवार जो वो कह रहे हैं कि अंदर बच्चे और ख़वातीन हैं तो वो दरवाज़ा तोड़ें, व्हाट वर योर इंटेंशंस। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। लेकिन डेफिनेटली सबसे पहले कि रेस्क्यू फोर्स पुलिस क्यों नहीं पहुंची वहाँ। अच्छा, वहाँ की सूरत हाल का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन आवाज़ों से, सुनिए ज़रा। क्या हुआ है? भाई लेडीज हैं। अरे भाई औरतें बैठी भी है, हम यहाँ पे लड़कियाँ बैठी भी, औरतें बैठी हैं, लड़कियाँ बैठी भी हैं, प्लीज आप लोग के घरों में भी औरतें हैं ना। आप बच्चों का ट्रॉमा देखिए कि जिससे वो गुजरे होंगे सारी सूरत हाल के दौरान, क्योंकि हमारे यहाँ हमने सारी ऐसी खबरें देखी और सुनी हुई हैं ना जहाँ 50-100 लोग आ जाते हैं और किसी इंसान को जिंदा जलाकर चले जाते हैं। एग्जैक्ट वही कॉन्सिक्वेंस इन लोगों के जहनों में भी आ रहा होगा। अब ये आ तो गए हैं, अब ये कुछ भी कर देंगे हमारे साथ। जब आपने कुछ ऐसे मुल्क और कुछ ऐसे माशरे होते हैं ना जिन्होंने इतनी एक्सट्रीम चीज़ नहीं देखी होती, वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हमने सब देखा हुआ है, इसलिए कोई भी इस किस्म की हरकत होती है तो हम फौरन एक्सट्रीम पे सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हो जाता होता भी है। सो लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है। एक बात जो आई माइट हैव मिस्ड अब्दुल्ला, कोई डिमांड थी इन लोगों की? बस कुछ भी नहीं, कुछ मतलब क्या करने आए? दैट्स आई कांट गेट माय हेड अराउंड द फैक्ट। छीना झपटी की है, जेवर तक तो छीन लिए। लेकिन आप चाहते क्या थे, यही तो समझ नहीं आई। क्योंकि यहाँ से बात शुरू हुई थी कि शोर ना मचाएं, शूटिंग हो रही है ना नेचुरली। उन्होंने कहा अच्छा जी हम नहीं मचाएंगे, अपॉलॉजी की गई, पहले ये भी कहा कि अच्छा जी हम नहीं करेंगे। उसके बाद आप सोचिए कि किसी ने प्लानिंग के तहत ये हमला किया गया है, ये हमला किया गया है। और कराची में ऐसा होना जो एक हब है अब कल्चर का, ड्रामों का, फिल्मों का, दिस इज वेरी अलार्मिंग। दिस शुड बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल और इन लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना ये ट्रॉमा हुआ है, वहाँ क्रू था, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वहां से आगे से कोई रिटेलिएट कर देता, कोई भी सानेहा बन सकता था। ये एक मिनी वॉर जोन बन सकता था। और दूसरा ये जो रोकने आ रहे हैं, अब जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि शोर ना बचाएं, तो मतलब तुम लोग डाकू लुटेरे हो कि अगला तो शोर ही मचा रहा है, तुम तो लूट के चले गए हो। ये और ये आई एम सॉरी बट आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस इलाका ऑल्सो, कि इज इट लाइक वेरी अनसेफ किस्म का जोन? भाई जो भी बात है, अनसेफ तो कोई भी इलाका नहीं होना चाहिए ना शहर का। वहाँ पे पहली दफ़ा तो ये शूट कर नहीं रहे होंगे। कराची में ऐसे दर्जनों इलाके हैं, दर्जनों ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर मामूल की शूटिंग है, होना मामूल की बात है। लेकिन इस तरह से वैंडलाइज करना, इस तरह से डराना धमकाना, इस तरह से छीना झपटी, लूट मार, हैरासमेंट, मार पीट, मेरा ख्याल है सारी दफात तो इसमें जेवर छीनने की, डाका मारने की, चोरी करने की, तशद्दुद का निशाना बनाने की, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की, सारी दफात के तहत इस महल्ले में जिस सरगना ने ये काम किया है। बॉटम लाइन ये है कि क्या कोई इनको पकड़ेगा? नहीं, वेट, मेक एन एग्जांपल तो ये आपकी रिक्वेस्ट और उम्मीद हो सकती है, लेकिन कोई पकड़ेगा नहीं। आई होप कि कार्रवाई होगी। लेकिन जो उस वक्त नहीं पहुंचे, 1 घंटा क्यों नहीं पहुंचे? सबसे बड़ी बात तो ये है, मिनटों में, रेस्क्यू को मिनटों में पहुंचना चाहिए। वो खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, वो बेचारे लड़के की हालत देखें तो घंटा इज अ लॉन्ग टाइम, कोई मर सकता है। मतलब आप सोचें कि ये हिरा मानी और ये सारे गुलापा और ये सारे लोग के कमरे में बंद हैं और बाहर से कोई दरवाजा तोड़ रहा है। These are big artists। ये है इनका तहफ़्फ़ुज़। बड़ा ही अफसोस हुआ। ये तो आपने सुन लिया। अभी हमने आपको बताना है कि आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में केक नहीं, आपको भूख लगी हुई है ना? केक टाउन में he wants to have a whole town full of cake। केक टाउन में खेले जाने वाले वार्म अप मैच में पाकिस्तान वुमेन ने बांग्लादेश की लड़कियों को 6 विकेटों से हरा दिया है, जबरदस्त कामयाबी समेटी है। और पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 7 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बनाए थे और निदा डार और नुसरत सिंधु ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जवाब में पाकिस्तान ने हदफ पूरे 16 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। हाउ कूल इज दैट? सो बिस्मा मारूफ और निदा डार ने बनाए 24-24 रन की इनिंग खेली है इन्होंने, और फिर आयशा नसीम 20 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रही। एंड दिस इज हाउ वी वन द मैच। कंग्रेचुलेशन गर्ल्स, और होपफुली आपका ये मोमेंटम जो है जीत का, ये जारी रहेगा। और जीत के बाद आपको केप टाउन में केक जरूर मिला होगा।
अच्छा, PSL की हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आई वंडर कि फ्रेंचाइजेस कितनी चाहती हैं कि हम लोग बात करें. If you guys want us to talk about PSL, give us some content to talk about. So Lihaza, there's almost nothing really happening except every cricketer getting married. और ये मेरा ख्याल है उनका अपना इंटरेस्ट भी खत्म हुआ है. लेकिन गाना तो देने आना है, इस दफा नहीं. अगर नया नहीं आना तो पुराना बता दें हमें कि भाई पुराना ही आएगा, लेकिन कंफर्म कर दें हमें कि क्या सिलसिला है. तो ये हम PCB को भी कह दें कि आपके पास भी कुछ मवाद है तो प्लीज़ लाइएगा, हमें दीजिए, क्योंकि लिटरली अब तो कितने दिन रह गए, 5-6 एक हफ्ते से कम रह गया अब तो. सो अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे एंड वी गोना सी यू इंशाल्लाह टुमारो. प्रेयर्स फॉर तुर्की एंड सीरिया.